अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज़ अब्दुल वहाब शाह फ्रॉम अनबॉक्स बावाजी यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज की वीडियो हम टेक्नो स्पार्क 5 प्रो पर पबजी मोबाइल को चलाकर देखेंगे कैसी परफॉर्मेंस रहती है। तो अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से कर लें सब्सक्राइब और साथ में दबा लें बेल आइकन को, ताकि हर न्यू वीडियो की आपको मिल सके नोटिफिकेशन सबसे पहले। तो दोस्तों, सबसे पहले चलते हैं सेटिंग में और यहाँ से चलते हैं दोस्तों ग्राफिक्स में और देखते हैं ग्राफिक्स की क्या सिचुएशन रहने वाली है। तो दोस्तों, यहाँ पर स्मूथ और बैलेंस में आप खेल पाओगे। एचडी, एचडीआर और अल्ट्रा एचडी यहाँ पर अवेलेबल नहीं है। तो स्मूथ और मीडियम फ्रेम रेट्स को मैं चूज़ कर रहा हूँ। ओके करते हैं और यहाँ से लगाते हैं एक गेम प्ले क्लासिक का। तो क्लासिक मैच में देखते हैं कैसी परफॉर्मेंस देता है टेक्नो स्पार्क 5 प्रो। तो दोस्तों, यहाँ पर ऑक्टा कोर प्रोसेसर आपको देखने को मिलेगा मीडियाटेक हीलियो A22 के चिपसेट के साथ। पावर वी आर GE8320 का GPU यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। 4 GB रैम है और 64 GB इंटरनल स्टोरेज है। तो देखते हैं जनाब क्लासिक में कैसी परफॉर्मेंस देता है, और फिर TDM का भी थोड़ा सा एक पार्ट देखेंगे कि TDM में कैसी परफॉर्मेंस रहती है टेक्नो स्पार्क 5 प्रो की। ओके, तो जनाब 35 सेकंड में हमारा मैच स्टार्ट होगा। तो यहाँ से जायरोस्कोप को चेक कर लेते हैं। तो ऑलवेज ऑन मैं इसको करता हूँ। तो यहाँ पर ये मैसेज दे रहा है द करंट डिवाइस डज नॉट सपोर्ट दिस फंक्शन। तो टेक्नो स्पार्क 5 प्रो में आप जायरोस्कोप का यूज़ नहीं कर पाओगे। यहाँ पर जायरोस्कोप का फंक्शन आपको नहीं मिलेगा। ओके, तो जनाब 5 सेकंड में हमारा मैच स्टार्ट होगा। तो मैं वॉल्यूम को यहाँ से कर लेता हूँ इंक्रीज़। ओके, तो दोस्तों क्लासिक में तो ग्राफिक्स क्वालिटी भी काफ़ी सही लग रही है और कंट्रोल भी काफ़ी सही लग रहे हैं। और यहाँ पर कोई भी फ्रेम ड्रॉप्स या लैग मुझे अभी तक देखने को नहीं मिला टेक्नो स्पार्क 5 प्रो में। तो अभी यहाँ पर मैं वीडियो को पॉज कर रहा हूँ और TDM का एक मैच लगाते हैं और वहाँ पर देखते हैं कैसी परफॉर्मेंस रहती है। ओके, तो दोस्तों TDM का मैच लगाया, देखते हैं यहाँ पर कैसी परफॉर्मेंस देता है हमारा टेक्नो स्पार्क 5 प्रो।
is heading to a perfect win. ओके तो दोस्तों TDM पर भी ठीक है परफॉर्मेंस, लेकिन यहाँ पर TDM पर मुझे थोड़ा बहुत लैग देखने को मिला है और थोड़ा बहुत फ्रेम ड्रॉप्स भी यहाँ पर देखने को मिले हैं। ओवरऑल ग्राफिक्स की क्वालिटी और कंट्रोल्स काफ़ी ज़बरदस्त हैं टेक्नो स्पार्क 5 प्रो पर, तो PUBG मोबाइल काफ़ी अच्छी आप यहाँ पर खेल पाओगे। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो। अगर आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से कर लें सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।